तो गाइस अभी हम जो उस पे थे, टेस्ट ऑफ H2 माइनस विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, उसमें हमारे पास जो होता है एक H2 माइनस होता है। H2 माइनस जो होता है वो रिएक्ट करता है Na2 FeCN5 NO। इसके बाद में यहाँ पे बन जाता है Na4 FeCN5 NOS। ये पर्पल या वॉयलेट कलर का होता है। ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है कि NO प्लस जो होता है NO प्लस होता है, दिस रिएक्ट्स विद H2 माइनस, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो जाता है। ठीक है, if we pass H2S gas into sodium nitroprusside solution, then there will be no change. But if H2S is passed in alkaline nitroprusside solution, then purple or violet coloration can be obtained. So H2S gas passed, no change. If H2S gas passed in alkaline Na nitroprusside, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें H2S प्लस H2 जो होता है वो H3O प्लस प्लस H2 माइनस बना लेगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे जो H प्लस होगा वो एल्कलाइन मीडियम के साथ H2 बना लेगा और सिर्फ H2 माइनस ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये H2S जो होगा वो H2 के साथ जाएगा और यहाँ पे H2 माइनस प्लस H3O प्लस बना लेगा, और जो H2 माइनस वो तो नहीं, जो H3O प्लस होगा वो आपका OH में से कंबाइन करके H2 बना लेगा। यहाँ पे फिर सिर्फ H2 माइनस बचेगा जो कि आ जाएगा, फिर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं मिथिलीन ब्लू टेस्ट। मिथिलीन ब्लू टेस्ट में स्पेसिफिक टेस्ट होता है और ये ओनली फॉर H2 माइनस होता है। इस टेस्ट में होता है एन डाइमिथाइल पैरामीन फिनाइलिन। इसमें ये होता है ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर एन डाइमिथाइल और एन डाइमिथाइल पैरामीन फिनाइलिन प्लस H2S और H2 माइनस यहाँ पे दोनों चलते हैं। इस रिएक्शन अच्छा नहीं, यहाँ पे हमारे पास FeCl3 भी होता है और साथ में FeCl3 प्लस ठीक है प्लस FeCl3, इट फॉर्म्स मिथाइलिन ब्लू। What is the structure of methylene blue? Methylene blue यहाँ पे ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, एंड देन दिस इज लाइक दिस, एंड यहाँ पे S होता है और यहाँ पे N डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ऐसे डबल बॉन्ड NH2 प्लस Cl माइनस, ये होता है मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू प्लस NH4 प्लस प्लस Fe2 प्लस, यहाँ पे बन जाता है बस मिथिलीन ब्लू में, डीप ब्लू कलर का होता है। फिर आयोडीन साइड टेस्ट होता है एक। आयोडीन अजाइड टेस्ट में हमारे पास Na3O जो होता है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और जो I3 माइनस का होता है ये डार्क ब्लू कलर का होता है। और जो होता है कलरलेस ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से इसमें कलर होता है। N3 माइनस प्लस I3 माइनस, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। N3 माइनस प्लस I3 माइनस को ZnS और CDS सॉल्यूशन डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट यहाँ से मिल जाता है, तो 3N2 गैस निकलती है प्लस 3I माइनस गैस निकल जाती है। तो ये ट्रेसेस की कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है,
और इस अमाउंट में ऑब्जर्वेशन this which the colorless gas tends to evolve. Colorless gas. Colorless gas evolves. It is not the specific test of S2 minus because SCN minus and S2O32 must also give this test. SCN minus and S2O32 minus can also give this test. Okay, and then we can say that okay, also give the same test. Now, what were the things which are in our syllabus? In our syllabus, we had this SCO32 minus SO42 minus and S2 minus. Now we did S2 minus. Now we are left with let's do the tests of NO3 minus. We have the test of NO2 minus. Let's do the test of NO2 minus. Okay. Okay. Um, Tests of NO2 minus. In the test of NO2 minus solubility में all are AgNO2 except AgNO2 all are soluble and that we have tests with AgNO3. In AgNO3 test we have NO2 minus which reacts with AgNO3 and it forms white PPT of AgNO2, okay, with plus NO3 minus. This is white PPT. We put it in NH3 solution and we get AgNH3 2 plus colorless soluble gas plus NO2 minus, and we know that all the compounds of silver Ag are soluble. Uh, all the compounds of silver are soluble in NH3 except Ag2S and Agi. Okay, except Ag2 and Agi, Ag2S and Agi, all the other complexes of Ag are soluble in NH3. Now we have the tests with, this is the second test, now we have the third test which we call as the test with dilute H2SO4 and HCl, which we know that gives a brown gas. Dilute H2SO4 or HCl, brown gas is released. Now the fourth test which we have, I am writing it over here, it is the brown ring test. In brown ring test we have the freshly prepared FeSO4 solution. FeSO4, let me write it again. FeSO4 solution. We have fresh plus NO2 minus and we have plus dilute H2SO4. We can also have a Ac2H and it is added slowly in the sidewise of the test tube and then we get brown ring. Okay, so we get brown ring very easily in this cases. Okay, now we have the tests of with K2Cr2 H plus and KMnO4H plus. KMnO4 tests with K2Cr2H plus and KMnO4H plus. In these tests what happens is that MnO4 minus reacts with NO2 minus plus H plus. MnO4 minus reduces into Mn2 plus and NO2 minus oxidizes into NO3 minus with H2. We can also have Cr2O7 2 minus will oxidize NO2 minus into
NO3 minus, it will get reduced into Cr3 plus green color. Okay, all these things which can happen over here. And then we have the destruction. Okay, we have the destruction of NO2 minus. In destruction of NO2 minus, what happens is that we actually convert NO2 minus into N2 gas. Okay, so Na into NO2 minus ion plus NH4Cl. In solution, it gets converted to NH4 NO2 plus NaCl. When we warm this, it releases H2O plus N2 gas. Okay, the colorless gas coming out, which doesn't help in burning. Okay, it rekindles the Mg splinter. Okay, okay. So listen, if we have NO2 minus and NO3 minus together, the brown ring test for NO3 minus cannot be performed because the concentrated H2SO4 produces NO2 gas brown with NO2 minus. That's why the NO2 minus has to be destroyed before performing this test. Okay, how do we destroy it? By putting it NH4 in NH4Cl. Okay, for this purpose we can also use urea or sulfonic acid. Now we have the test of NO2 minus as oxidizing agent. Say this was 6th and this is 7th. Then test of NO2 minus. In oxidizing agent, what happens is that we have Ki, it reacts with NO2 minus, it produces I2 and NO gas. Okay, here I2 can be identified with the help of excess I2 plus excess. Ki can form Ki3. Then we have I2 plus starch, it gives deep blue coloration. And we have I2 plus CCl4 CHCl3 CS2, which forms a violet layer. Okay, so now we have done this. Now we got two tests we are left with. Now we are left with the tests of CO32 minus. We have done, SO4 minus. I think we have not done. We have done S2 minus tests and NO3 minus tests. So now what we have to do is that now we have to do the tests of Cl minus, Br minus and I minus. It will write Cl minus, Br minus, I minus tests. In these tests, which we have to do is first the solubility. Solubility in this accepts Cl minus, Br minus, I minus of Ag plus. So accept, so Ag plus, Hg2 2 plus, Pb2 plus, Cu plus. Ag, Hg, Pb, Cu. इनके Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस हाइलाइट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, और साथ में HgI2 और BiI3 ये सारे insoluble होते हैं, except these all are soluble.
Then we have the tests of this with concentrated H2SO4. concentrated H2SO4 टेस्ट में क्या होता है, Cl माइनस जो होता है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और HSO4 माइनस बना देता है और HCl गैस निकल जाती है। HCl गैस को हम चेक कर सकते हैं ग्लास रॉक डिप्ड इन NH3 के साथ में, और जो Br माइनस I माइनस होते हैं उनको बताता हूँ अगले पेज में। तो अगर Br माइनस और I माइनस होगा, ठीक है, तो इनको करने के लिए हमारे पास X माइनस होता है। X माइनस जो होता है वो H2SO4 में जाता है और H2SO4 माइनस में जाती है वो HSO4 माइनस प्लस HX निकाल देता है, ठीक है। और जो HX होता है वो कॉन्क H2SO4 में जाता है और उसमें जाके X2 प्लस SO2 गैस बना देता है, ओके। एंड देन X2 इज Br2, हमें पता है रेडिश ब्राउन वेपर निकलते हैं, I2 के वायलेट वेपर्स निकलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, all three vapors can be all three CMS Br minus can be identified, ठीक है। Next we have to do over here the test with MnO2 plus concentrated H2SO4, okay। Test with MnO2 plus concentrated H2SO4। MnO2 plus concentrated H2SO4 की टेस्ट में बस X माइनस होगा, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ये क्या करते हैं कि इसमें जो है हमारे पास में 2X माइनस प्लस MnO2 प्लस H प्लस स्ट्रॉन्गर ऑक्सीड, ये MnO2 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज compared to oxidizing agent and H2SO4 concentrated, okay। And what happens is that it releases X2 plus Mn2 plus plus, okay। So ये आपको पता है कि ये X2 से साइड डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है टेस्ट विथ AgNO3। इसमें होता है कि Cl माइनस जो होता है Cl माइनस प्लस AgNO3 सॉल्यूशन, वही AgNO3 सॉल्यूशन डालते हैं तो AgCl की वाइट पीपीटी बनेगी। Br माइनस को AgNO3 में डाल देंगे तो यहाँ पे AgBr की पीपीटी बनती है नीचे की तरफ, और इसकी वाइट पीपीटी होती है और इसकी तो पेल येलो होती है, और इसकी जो होती है AgI की येलो पीपीटी होती है, ठीक है। और ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड। Then we have the solubilities of AgA of this and how will we distinguish all these। तो इनके डिस्टिंग्विश करने के और भी तरीके होते हैं, AgCl, AgBr और AgI को, ठीक है। हम जो इसमें अलग अलग तरीके से कर सकते, मतलब एक तरीके से कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटीज के मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग 4 डिफरेंट हमारे पास होते हैं उनमें डाल के देख सकते हैं। Let me draw it again, it's not so tidy। So one, we have how many? We have 4. So we have which of 4, okay। यहाँ पे हमारे पास
AgCl होगा, यहाँ पे होगा AgBr, यहाँ पे होगा AgI। हम इसको अलग अलग सॉल्यूशन में डाल के देखेंगे, जैसे NH3 सॉल्यूशन, फिर Na2H2O3, फिर NaCN सॉल्यूशन और साथ में डाइल्यूट HNO3। तो इसको देखो, जो ये वाला होता है पहले वाला तो इसमें पूरी तरह सॉल्युबल होता है, ये वाला जो है पार्शियली होता है, और ये वाला इनसॉल्युबल होता है। ये तीनों Na2H2 के सॉल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं और NaCN सॉल्यूशन में भी सारे से सॉल्युबल होते हैं। डाइल्यूट HNO3 में कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो यार बस इसमें ये याद रख लो कि Na2H2O3 में सारे होंगे, NaCN में सारे होंगे, डाइल्यूट HNO3 में कोई भी नहीं होगा, और NH3 के अंदर पहला वाला थोड़ा सा होता है, तीसरा वाला पार्शियली सॉल्युबल होता है, चौथा वाला बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और ये कलरलेस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कौन कौन से बनाते हैं इसके अंदर, ये वाले बनाते हैं AgNH3O2+। ठीक है, इस वाले में बनता है AgH2O3, AgH2O3 होल ट्वाइस 3-। ये वाला बनता है AgCN होल ट्वाइस माइनस वाला। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर the test with PbOAc whole PbOAc whole twice solution। ठीक है, what happens in PbOAc that हमारे पास Cl माइनस होता है, उसको हम PbOAc होल ट्वाइस में डाल देते हैं, यहाँ से बनता है PbCl2। एक मिनट ठीक से लिखता हूँ उसको मैं, Cl माइनस प्लस PbOAc होल ट्वाइस, यहाँ पे बनता है PbCl2। ठीक है, यहाँ पे Br माइनस प्लस ये वाले से बनता है PbBr2, और I माइनस प्लस इससे बनता है यहाँ पे PbI2। ठीक है, और ये वाला जो होता है ये होता है वाइट, ये वाला भी होता है वाइट। वाइट वाइट और येलो। ठीक है, नोट द कंपाउंड्स दैट PbCl2 and PbH2C2O4H2 have needle like appearance। तो भाई इसमें हमारे पास जो होता है उसमें नीडल लाइक अपीयरेंस होता है, इसमें होता है एंड H2C2O4 डॉट 2H2O का होता है, PbCl2 और H2C2O4 डॉट 2H2O का होता है। अगर PbCl2 को वही है यार, PbI2 के सस्पेंशन को हीट करोगे तो येलो आएगा, ये दोनों वाइट वाइट से आ जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव द स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ Cl माइनस। इसमें क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट आता है। ठीक है, इसे होता है क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट में हमारे पास K2Cr2O7। चलिए आपको मैं अगले पेज पे बताता हूँ, यहाँ पे स्पीच भी ठीक है। तो ये देखो, इसमें हमारे पास होता है K2Cr2O7 प्लस NaCl और एनी अदर सेल सॉल्ट, उसको मिक्स वेल कर देते हैं, प्लस में H2SO4 डालते हैं, कॉन्क H2SO4, और फिर यहाँ पे रेडिश ब्राउन वेपर्स, रेडिश ब्राउन CrO2Cl2 वेपर्स आ जाते हैं। ठीक है,